awesome, then you, instead of saying you are excellent, you can say dandy. And like, what kind of a word is that? Like, if I use it in a sentence, you can say, what a dandy you are today. It means that you are looking very excellent today. And you can say more, that her parents appreciated her on her dandy performance. And I must say that my boss never appreciated me on my dandy performances. So dandy means excellent, but I would say my office is very really dandy, because dandy means excellent, and an excellent thing of its kind. Like, there is no comparison, nothing. So dandy is a word of the day. And I would say you that if you are going to say someone excellent, you can use dandy. You can use your own Google, and you can Google the word dandy, and you can get more sentences, more words, and more synonyms, anything which you like to know about dandy. But the word of the day is dandy. So if you are going to say excellent next time, you know the meaning of excellent, but just go for the dandy. Dandy is more like fashionable. So that is actually the word of the day. Now it's 8:35, and if you have a question, I'm not getting any question, please, I would say you, uh, please ask questions, please. Questions will help you to learn. Questions will help you to know more. So ask questions if you have any question. Even if you think that my question is really stupid question, then even then please ask. So I would be able to tell you that what is actually better for you. So please tell me. Actually, we are going to at the last moment of this meeting. So please ask a question, put it in a chat box, and I want to answer that, because I'm not getting any idea that how much you are getting the points and what you got from this topic, like this 4 parts of speech. So please uh, put your question in a chat box so I can answer your questions, please. And if you want to ask anything about dandy, it says our meeting is really dandy. So please say, and when the chat would end, yeah. Okay. So, okay, I got a question. Thank you so much. I got a question. Ma'am, noun के बारे में confirm करना था. Noun is a name. Okay. Noun is a name of person, place or a thing. किसी भी चीज, जो भी कोई चीज जो नाम रखती है, उसका कोई नाम होता है, वो नाउन होती है. फॉर एग्जाम्पल, बेड एक नाउन है. और मेरे पास जो चीजें हैं, आई कैन काउंट लाइक दिस bottle. Yes, it's a noun. Books are noun. And everything is noun. Everything. हर वो चीज जिसका कोई नाम होता है, वो noun है. Noun is a name of a person, place, or a thing. Noun is a name of a person, place, or a thing. कोई भी चीज noun हो सकती है. If you are getting any, मैंने जो mistake की है वो बता दें, फिर next ना करूं. रहमाना, please, you should have actually asked that time, because I forgot. Did I ask a question from you? Oh, I'm really sorry for that. Actually, I have a very short memory. Rahmana, I guess I don't think so. Did I, what I asked from you? I'm really sorry, but the point is that I have cleared the mistakes when you answered me, and after that, when I cleared the points, that is actually the things. Next time I would write your names and the mistakes, so I would tell you one by one. But otherwise, the point is that the main mistake you were doing, overall mistakes, I'm telling you that mistakes were that you were confused. That was not a mistake. I wouldn't say that is a mistake. It's just you are learning. So in learning process, you were not clear at that time of a verb. So that was the main thing I found. That was actually the main thing which you were learning at that time. So I'm not saying it a mistake, it's a learning. So now I'm sure you are clear about verb, action verb, and state verb. If someone is saying going to ask you, uh, you are a very good girl, and where is the verb in this? So you can say are, or you can say my goodness is actually the main verb. So girls, please ask a question. Please ask a question. I have this time, which now starts from here, 15 to 20 minutes. I want to
and answers your questions. Please ask. If you don't ask, you will never learn. That is actually the criteria of learning. If you will ask, you will learn. If you don't ask, you are not going to learn. Please. My teachers used to kick me out from the classroom because I used to ask too much, and they said, just get out from the classroom now. But please, I'm not going to say you get out, but please ask if you are getting a confusion. Because when I'm going to ask from you, there is no reason that you can say, ma'am, I'm sorry, we didn't get that point. If I'm going to start a question from you, then okay, ma'am, pronoun को भी एक दफा फिर समझा दें please. Sure. अच्छा, देखो, what is pronoun? We use pronoun in a place of noun. हम pronoun को use करते हैं noun की जगह पर. Pronouns होते हैं ना, और अगर तुम्हें मतलब जैसे मैंने पूछा था, I have flowers. I, we, you, they, he, she, it. These all are pronouns जो हम यूज करते हैं नाउन की जगह पर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लैंग्वेज की बात करें, what is with in this sentence? What is with in this sentence? with means like अगर हम किसी सेंटेंस में with को यूज करते हैं, तो with जो होता है वो बेसिकली एक कंजंक्शन के तौर पे यूज होता है. आप उसको अटैच कर रहे होते हैं, या इसे आप विद उसको, ये भी preposition भी यूज होता है, विद preposition भी यूज होता है. बट ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है, तो इस वजह से जो सिर्फ मेन 4 का टॉपिक है, तो मैं सिर्फ 4 ही अभी क्लियर कर रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स एंड अदर थिंग्स. सो प्लीज खास को question relevant to topic, and I'm going to tell you in the next class the next 4 parts of speech, so you can ask within that, but with is actually the preposition. So okay, pronoun. We use pronoun in a place of noun. Can you please adjective please? Okay, yes, I can repeat. Okay, first one is I was on pronoun. Like how you use pronoun in your daily life. Like for example, if you are talking to someone and you are saying that you know what Alia was wearing at that day, she was wearing the black dress, she was looking very good, she was not dandy like me, but actually she was good. So what you say, you don't say Alia, 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 you don't repeat the word Alia, Alia, Alia. You actually switch to she, you actually switch to he. Once you take a name and after that you use he, she, that he or she is actually pronoun. आप बार बार लफ्ज एक उसका नाम यूज नहीं करते. जब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हो आई हैव अ कैट, it is very good, it is very obedient. So it what is it क्या है, वो नाउन की जगह आप प्रोनाउन यूज करते हैं. आप हर टाइम नाउन यूज नहीं करते. और ये इंग्लिश लिखते भी जब आप हैं, तो आप एक बार लिख देते हैं कि अहमद इज माई बेस्ट फ्रेंड, बट उसके बाद अहमद ही हो जाता है, ही. तो अब जो भी उसके बारे में ही लिखते हैं, तो दैट इज एक्चुअली द प्रोनाउन. वी यूज प्रोनाउन इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है, आई होप आई हैव क्लियर्ड यू द पॉइंट, एंड इफ स्टिल you feel that you are not clear, you can ask from me. Okay, ma'am, pronoun bata diya, what is within sentence? Ma'am, can you repeat adjective? Yes, adjective is actually the quality of a noun or a pronoun. Noun और pronoun के बारे में कुछ मजीद कहना हो ना, तो जो मजीद लफ्ज ऐड किए जाते हैं ना, वो एडजेक्टिव होते हैं. जैसे मैं कहती हूँ माई टीचर इज रियली गुड, तो जो गुड है ना, वो है एडजेक्टिव. माई टीचर कौन है, वो नाउन है, और माई टीचर नाउन है, और उनकी क्वालिटी क्या है, गुड. सो वो हो गया. और अगर मैं ये कहूँ कि खंसा इज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, खंसा इज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, खंसा की क्वालिटी यहाँ पे क्या है, टॉकेटिव, वो बहुत बातें करती है. तो वो जो उसको मजीद, खंसा को मजीद क्या डिफाइन कर रहा है, टॉकेटिव, तो वो एडजेक्टिव है. वर्ड्स पे मत जाएं, सेंस पे जाएं कि सेंस क्या बन रही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 4 बुक्स, आई हैव 4 बुक्स. तो बुक्स को मजीद क्या चीज डिफाइन करिए, आई नहीं, नॉट आई इज नॉट डिफाइनिंग, 4 बुक्स. तो जो 4 क्या है, 4 इज एडजेक्टिव. फाइन. आई हैव 5 फिंगर्स, आई हैव 5 फिंगर्स, मेरी फिंगर्स को क्या चीज मजीद डिफाइन कर रही है, आई हैव अ फिंगर्स, देयर इज नो एडजेक्टिव, आई हैव फिंगर्स. बट I have 5 fingers. So what is 5? 5 is adjective. Noun को कोई भी चीज मजीद बयान कर रही हो,
दैट इज एक्चुअली एडजेक्टिव। वो गुड भी हो सकती है, वो बैड भी हो सकती है। क्वालिटी से कभी ये माइंड में मत लाएं कि वो क्वालिटी अच्छी होगी, कोई भी क्वालिटी हो सकती है। क्वालिटी, माय ब्रदर इज नॉट गुड एंड ही इज एक्चुअली नॉट गुड। सो नॉट गुड उसको डिफाइन कर रहा है। मैं उसे बैड कहूं या उसे नॉट गुड कहूं तो वो एडजेक्टिव है, वो उसको डिफाइन कर रहा है। तो जो चीज नाउन को मजीद डिफाइन करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ओके मैम, एक्शन और स्टेट वर्ब एक ही सेंटेंस यूज हो सकते हैं? नहीं, एक सेम, देखो अगर सेंटेंस एक है ना, बाजू का तो होता है कि सेंटेंस दो होते हैं डिफरेंट, बीच में कॉमा आ रहा होता है, ठीक है, या बीच में फिर वो जो होता है ना वो कंजंक्शन आ रहा होता है, जिन्हें जोड़ा होता है, तब तो हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई वर्क इन अ बैंक, आई वर्क इन अ बैंक एक ही है, उसमें एक ही यूज हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आई वर्क इन अ बैंक and I am assistant director there. I work in a bank and I am assistant director. Now see that I have used two sentences in one continuous position. I work in a bank and I am assistant director there. I am जो है वो verb है, वो state verb है। I work जो है वो verb है, action verb है। लेकिन दोनों में चूंकि मैं एक साथ नहीं यूज कर सकती, अलग अलग यूज करूंगी, उनमें एंड आ रहा है। आई वर्क इन अ बैंक एंड आई एम असिस्टेंट देयर, असिस्टेंट डायरेक्टर देयर। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है। एक ही जुमले में दो यूज नहीं हो सकते हैं, दो वर्ब नहीं हो सकते एक जुमले में यूज, एक वक्त में एक ही होगा। हाँ, बीच में अगर कॉमा आ जाए तो इट मीन्स वो दो हो गए हैं, बीच में